हेलो फाइट फैंस, कैसे हो आप सभी। आज की फाइट अपडेट में बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट रिसेंट फाइट एलेक्सा वर्सेस वेलेंटिना से आ रही है, जिसमें सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जज को कि कैसे लास्ट राउंड में 10-8 क्यों दिया और सेकंड राउंड में 10-8 पॉइंट होना चाहिए था। देन उसी से रिलेटेड डेना वाइट ने रिवील किया कि ये फाइट फेयर इनफ नहीं थी, जस्ट बिकॉज जज ने एक गलत डिसीजन लिया था। इस फाइट के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बात की है, तो उस वीडियो को जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देन डेना वाइट ने बताया कि ये फाइट रीमैच जरूर होगा, मे बी नेक्स्ट ईयर में, और ये रही वो वीडियो। They've assured me that this guy isn't a bad guy. He just fucked up and made a mistake, and it's unfortunate, and there's no way in hell that was a 10-8 round. Now you kind of wonder what you do next, right? I mean, it sounds like Valentina's going to need surgery on her hand, so I don't know if that impacts it, but do you feel like they need to fight a third time? You have to rematch. You have to do the rematch. We will rematch them. It's the right thing to do. It's the fight that needs to happen. And then last thing, just to clarify, you talked about how graasoc, for sure, we want to have that rematch. If the injury of Shevchenko and the surgery of the recovery is long, are you still going to hold out and make that rematch? No, we're comfortable with where she's at as far as her injury is. We're comfortable with it. That should probably start striking again in 3 months or a little less. Yeah. Yep, all good. और आगे जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट फाइट अपडेट इस साल का UFC का बेस्ट इवेंट होने वाला है, जहां UFC 294, UFC 295 और UFC का मेन इवेंट 296 सारे एक से बढ़कर एक फाइट मैच हैं। जहां UFC 294 में मेन इवेंट इस्लाम वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा रीमैच है, वो भी लाइट वेट डिवीज़न बेल्ट के लिए, और इसका को मेन इवेंट खमजात वर्सेस पोलो कोस्टा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट मैचअप होगा। देन UFC 295 का मेन इवेंट जॉन जॉन वर्सेस स्टीपी होगा, वो भी हैवीवेट डिवीजन बेल्ट के लिए, और ये जॉन जॉन की लास्ट फाइट हो सकती है UFC में। इसके बाद जॉन जॉन रिटायरमेंट ले लेगा, इसलिए इस फाइट की हाइप बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और 295 का को मेन इवेंट होगा वो एलेक्स पेरेरा फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन वर्सेस ग्रीपरास्कर के साथ, वो भी वेकेंट लाइट हैवीवेट डिवीजन की बेल्ट के लिए, जहाँ एलेक्स अपने सेकंड डिवीजन टाइटल को जीतने में फुल रेडी है और ग्रीपरास्कर अपने काफ़ी लंबे टाइम बाद ऑक्टेगन में रिटर्न कर रहा है। और UFC 296 जो इस साल का लास्ट इवेंट होने वाला है, उसका मेन फाइट लियोन एडवर्ड वर्सेस कोबिन कविंटन है। वैसे लियोन अभी अनडिस्प्यूटेड है वेल्टरवेट डिवीज़न में, और उसकी लास्ट फाइट कुमारो उस्मान के साथ हुई थी। वो सब हमने तो देखा ही होगा, पावरफुल किक ने कैसा गेम पूरा पलटा दिया था। क्या आपने वो फाइट देखी थी? अगर देखी थी तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस साल ये तीनों इवेंट UFC 294, UFC 295 और UFC 296 सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करने वाले UFC में और पूरे MMA प्लेटफॉर्म में भी। और ये रही वो पूरी वीडियो जहां डेना वाइट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया। What's up, everybody? UFC President Dana White here to announce some more badass fights. You know the main event for UFC 295 on November 11th in New York is Jon Jones, the GOAT and reigning heavyweight champion, and he is defending his title against the former champ and the greatest heavyweight of all time, Stipe Miocic. Now, I have the co-main event. Former light heavyweight champion Yuri Prochazka faces former middleweight champ Alex Pereira for the vacant 205-pound title. Prochazka is one of the most exciting fighters on the roster. He had to vacate the title when he sustained the worst shoulder injury in UFC history, but now he is fully recovered. He's still undefeated in the UFC, and he wants his belt back. Pereira is one of the scariest dudes to ever set foot in the octagon. He won the middleweight title just 1 year after making his UFC debut. Now he's moved up to light heavyweight with his sights set on a second world title in a new weight class. That is going to be an awesome fight. At UFC 296 on December 16th in Las Vegas, Leon Edwards versus Colby Covington will headline our last pay-per-view of the year with the welterweight title on the line. The champ hasn't lost a fight in 8 years, and he's coming off back-to-back wins over the greatest welterweight of all time, Kamaru Usman. He is defending his title against Colby Covington, a relentless pressure fighter with unstoppable cardio. In the co-main event for UFC 296, UFC flyweight champion Alessandro Pantoja faces number 4 Brandon Royval. Pantoja is an absolute savage with 18 career finishes coming off his second win over Brandon Moreno. He is primed for his first flyweight title defense. Royval's only UFC losses are against the division's last 2 champs, Pantoja and Moreno. He's put together an impressive win streak to earn the rematch with Pantoja with the 125-pound title on the line.
we have two incredible pay-per-view cards to close out 2023. UFC 295, Saturday, November 11th, Jones versus Miocic, Prohaska versus Pereira, Madison Square Garden, New York City. UFC 296, Saturday, December 16th, in Vegas, Edwards versus Covington, Pantoja versus Royval, and we are not done adding fights to these cards. So you do not want to miss either one of these events. Make your plans now, and I will see you at the fights. आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर MMA कम्युनिटी।